जय जगन्नाथ। चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड pediatric child age follows 50 ml fluid transfused over 30 minutes at drop rate 15 ml per hours. In 30 minutes, what will be flow rate? आंसर करंतु समस्ते। एठी हमर वॉल्यूम केते देला? वॉल्यूम देला हमर 50 ml। टाइम हमर केते देछि? ओवर 30 मिनिट। टाइम देला हमर 30 मिनिट। एठी हमर ड्रॉप फैक्टर केते देला? 15 ml। ड्रॉप फैक्टर 15 ml। ताले हमर फ्लो रेट केमती कैलकुलेट करिबा? हमर फ्लो रेट रो फॉर्मूला कोन ना वॉल्यूम इन ml into ड्रॉप फैक्टर divided by time in minute। हमर वॉल्यूम केते देला? 50 ml into ड्रॉप फैक्टर केते? 15 ml। 15 टाइम केते देछि हमर? 30 मिनिट। तो हमर कैलकुलेशन करिबा केते आछि हमर? 25 ml। तो हमर फ्लो रेट केते आसीबा? आंसर केते आसीबा? ऑप्शन सी 25 ml। Nurse asked to give 1000 ml of normal saline at flow rate of 125 ml per hours. How much time it will take to complete this fluid? Answer करंतु समझते। 8 hours, 6 hours, 10 hours, 12 hours। तो ये हमरो वॉल्यूम केते देला? वॉल्यूम देछि हमरो 1000 ml। हमरो फ्लो रेट केते देला? 125 ml पर आवर। तो हमरो हाउ मच टाइम केते टाइम रे याको हमको कंप्लीट करिया पई पड़िबो ना टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम टू infuse in ml divided by flow rate जोटा कि हमरो ml पर आवर। हमरो टोटल वॉल्यूम केते देछि? 1000 ml डिवाइडेड बाय फ्लो रेट केते देछि हमरो ना 125 ml। 125 देखो कैलकुलेशन करिबा केते आसीबा हमरो 8 hours हमरो आंसर आसीबो। ऑप्शन ए 8 hours। Nurse on PICU advised to give 400 ml fluid to be given on 8 hours. Drop factor is 60 drop per minute. Nurse will run this fluid at what flow rate? आंसर करंतु समझते। तो हमरो कोन देला एठी हमको वॉल्यूम देछि हमरो केते ना 400 ml। हमको टाइम देछि केते ना 8 hours। एंड हमरो ड्रॉप फैक्टर केते देछि? ड्रॉप फैक्टर हमरो 60 ड्रॉप्स। फ्लो रेट हमरो कोन केमती कैलकुलेट करिबा ना फ्लो रेट वॉल्यूम इन ml into ड्रॉप फैक्टर divided by time in minute। तो हमरो वॉल्यूम केते देला ना 400 ml into ड्रॉप फैक्टर केते देछि हमरो 60। टाइम केते हमरो 8 hours। टाइम हमको मिनिट रे करिया पई पड़िबो into 60 करिबा। 60 क्लासिबो 50 ड्रॉप्स पर मिनिट। ओटा हमरो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 50 ड्रॉप्स पर मिनिट। All of the following are correct regarding stoma formation except stoma formation रो को स्टेटमेंट हमरो करेक्ट except stoma is
created near the bony prominence. Stoma should be created away from bony prominence. Stoma is created in lower abdomen in fatty region. Stoma can be done anywhere. आंसर करंतु समस्ते. तेरो करेक्ट आंसर कौन हम? स्टोमा इज क्रिएटेड नियर द बनी प्रोमिनेंस. हमको ये एक्सेप्ट मागी थिला नियर बनी प्रोमिनेंस रे हमर केबे भी स्टोमा क्रिएट हुए नाही. ECG of the patient is showing ST depression, prominent U wave and inverted T wave. Which of the electrolyte imbalance present? Potassium 2.2 milliequivalent per liter, calcium 8.2 milliequivalent per liter, magnesium 1.8 mg per dl, sodium 133 milliequivalent per liter. आंसर करंतु. ST depression, prominent U wave and inverted T wave हमरो कौन इंडिकेट करूची ना हाइपोकैलेमिया. हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट करूची. तेरा करेक्ट ऑप्शन आसीबो ऑप्शन ए पोटेशियम 2.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. नॉर्मल पोटेशियम लेवल हमरो केते? नॉर्मल पोटेशियम लेवल 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. कैल्शियम हमरो 8.2 देइची जोटा कि नॉर्मल. नॉर्मल कैल्शियम केते रहउची ना नॉर्मल कैल्शियम 8.5 टू 10.2 mg per dl. मैग्नीशियम हमरो 1 पॉइंट देइची जोटा कि नॉर्मल. नॉर्मल मैग्नीशियम केते रहउची ना 1.6 टू 2.6 mg per dl. एंड सोडियम हमरो केते रहउची नॉर्मल सोडियम 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. Patient is undergoing blood transfusion. Patient रो blood transfusion चलची. Suddenly patient shows complaints of transfusion reaction. Suddenly patient रो कौन हैला ना transfusion reaction. What will be the priority nursing intervention? कोउटा हमरो priority nursing intervention आसीबो. Stop the transfusion and remove cannula. Stop the transfusion and flush with NS. Complete the transfusion and administer injection Avil. Complete the transfusion and discard the bag. आंसर करंतु समझते. यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड फ्लश विथ NS. एटी स्टॉप द इन्फ्यूजन फास्ट ऑप्शन देखिकी राइट करिवे नाही काहेकि ना एटी कोन देछि ना स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड रिमूव द कैनुला. हमें कैनुला को रिमूव करिबा नाही. कैनुला को हमें नॉर्मल सलाइन रे फ्लश करिबा. नेक्स्ट ऑप्शन ले देछि कंप्लीट द ट्रांसफ्यूजन. जेहेतु पेशेंट रो हमरो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हेछि हमें ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करिबा नाही. थर्ड ऑप्शन रे भी देछि कंप्लीट द ट्रांसफ्यूजन. हमें ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करिबा नाही. तो हमरो करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड फ्लश विथ NS. Nurse taking care of child who is having epilepsy. नर्स गोटे चाइल्ड को केयर करथला जो पेशेंट की एपिलेप्सी होची. व्हाट नर्स शुड डू इमीडिएटली. नर्स कौन करिबा इमीडिएटली? एयरवे मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड साइडलाइन पोजीशन. एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू चाइल्ड. डू नथिंग एंड record the epilepsy type and duration. Inform doctor about epilepsy and record in nurses chart. आंसर करंतु समझते हैं. यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए एयरवे मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड साइडलाइन पोजीशन. What advice should a nurse to give to a patient on lithium therapy? गोटे पेशेंट रो लिथियम चलीची. नर्स कौन एडवाइस करिवो पेशेंट को? ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. टेक मेडिसिन आफ्टर मील.
टेक मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, टेक हाई कैलोरी डाइट। आंसर करंतु समस्ते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। लिथियम हमरो कोन ना लिथियम होची ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनिया। मैनिया रो ड्रग ऑफ चॉइस होची लिथियम। हमरो नॉर्मल लिथियम लेवल केते रहउची? नॉर्मल लेवल रहउची 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। प्रोफाइलैक्टिक लेवल केते रहउची? प्रोफाइलैक्टिक लेवल 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लिथियम कार्बोनेट तारो डोज केते रहउची 1500 टू 2400 mg पर डे फॉर एक्यूट एपिसोड पाई एंड 900 टू 2100 mg पर डे फॉर मेंटेनेंस डोज पाई। तो एटार करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। कहीं कि ना डिहाइड्रेशन जदि हुए पेशेंट को, डिहाइड्रेशन हेले किडनी कौन करिवो ना किडनी मोर रिएब्जॉर्ब लिथियम, जोटा कि लिथियम टॉक्सिसिटी हे जिवो। सेते में पेशेंट को एडवाइस करिबा कि ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। All of the following are sesamoid bone except patella, fibula, calcaneum, cyamella। आंसर करंतु समस्ते। क्वेश्चन रे कोन देला ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर sesamoid bone except देछि। तो हमर करेक्ट आंसर कोन आसीबो ऑप्शन सी calcaneum। calcaneum हमर होछि जोटा कि हिल बोन कहा जाउछि calcaneum को, आ एटा हला टार्सल बोन, ता sesamoid bone नुह। रेस्ट ऑप्शन पैटिला, फेबुला एंड कायमेला ए तीनटा हमर रहउछि sesamoid bone, जोटा कि पैटिला हमर रहउछि, पैटिला को नी कैप भी कहा जाय, नी कैप एटा हमर हला लार्जेस्ट sesamoid bone। फेबुला हमर हला स्मॉलेस्ट sesamoid bone एंड कायमेला हमर हला एक्सेसरी sesamoid bone, एक्सेसरी sesamoid bone। How frequently will you conduct blood test while patient is on regular clozapine? ते पेशेंट रो रेगुलर क्लोजापाइन चलची, आमे केमती तारो ब्लड टेस्ट करिबा? ट्वाइस ए वीक, वीकली, मंथली, फोर्टनाइट। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी वीकली। क्लोजापाइन हमर कोन करे ना ए ग्रान्युलो साइटोसिस। A primary gravida with O negative blood group delivered a baby with O positive blood group। गोटे प्राइमरी ग्राविडा मदर जोंटा कि तारो ब्लड ग्रुप थिला O नेगेटिव एंड से जो बेबी डिलीवर करिछि बेबी रो ब्लड ग्रुप होछि O पॉजिटिव। While DCT was negative, what should we do next? Repeat DCT, give 300 mg of anti-D to mother, give 150 mg of anti-D to mother, no need to give anti-D to mother। आंसर करंतु समझते। ना डीसीटी हमर कोन आछि डायरेक्ट
कुम टेस्ट यार करेक्ट आंसर आसीबो गिव 300 mg NTD to mother. Which of following component not present in normal saline? Normal saline रे कोउ component टा न थाए. Sodium 154 milliequivalent per liter, chloride 154 milliequivalent per liter, potassium 52 milliequivalent per liter, none of the above. आंसर करंतु समझते. नॉर्मल सलाइन रे हमर कोन सोडियम थाए, क्लोराइड थाए, पोटेशियम हमर न थाए नॉर्मल सलाइन रे. यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी. Patient is allergic to beta lactamase and which of following drug is safe to administer? पे पेशेंट रो कोन ना हमर जो बीटा लैक्टामेज एंटीबायोटिक अछि, पेशेंट रो बीटा लैक्टामेट एंटीबायोटिक को तार एलर्जी अछि. Which of following drug is safe? आमे कहू एंटीबायोटिक पेशेंट को एडमिनिस्टर करि परिबा. एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन, सेफाजोलिन. आंसर करंतु समझते. यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी वैंकोमाइसिन. एमोक्सिसिलिन आसुची हमर बीटा लैक्टामेज, पेनिसिलिन बीटा लैक्टामेज, सेफाजोलिन भी बीटा लैक्टामेज, किंतु वैंकोमाइसिन हमर आसुची ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक. वैंकोमाइसिन हमर काहार ड्रग ऑफ चॉइस ना MRSA. मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस. साइड इफेक्ट कोन यार ना रेडमैन सिंड्रोम. रेडमैन सिंड्रोम. A patient came to emergency department with uncontrolled diabetic. ए पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आसी जोटा कि तार अनकंट्रोल डायबिटीज अछि. यूरिन टेस्ट शोड कीटन पॉजिटिव. यूरिन रे कोन कीटन पॉजिटिव अछि. एबीजी रिपोर्ट शो pH 6.25, PCO2 39, PO2 55 and blood glucose is 600 mg per dl. Which of the following condition is present? Respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis, metabolic alkalosis. आंसर करंतु समझते. pH हमरो 6.25 जोटा कि इंडिकेट करूची severely acidosis. नॉर्मल pH हमरो केते ना 7.35 to 7.45. हमरो pH कमिची माने HCO3 भी डिक्रीज होबो. काहे कि ना हमरो pH and HCO3 इक्वल. pH कमिबो माने हमरो HCO3 कमिबो, pH हमरो इंक्रीज होबो माने HCO3 हमरो इंक्रीज होबो. तमरो कोन आसिला एटा HCO3 डिक्रीज होइची माने मेटाबॉलिक हमरो एसिडोसिस. ऑप्शन सी राइट आंसर मेटाबॉलिक एसिडोसिस. An antenatal mother came to OPD with hemoglobin 8.5 gram%. Which of the following is true? Antenatal mother गुटे OPD को आछि जोटा कि तार hemoglobin केते अछि ना 8.5 अछि. तार कोन इंडिकेट करूची माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया, नो एनीमिया. आंसर कोनते समझते. हमर WHO गाइडलाइन रे एनीमिया प्रेगनेंसी टाइम रे केते रहउची ना HB मोर देन 11 पर ग्राम
HB more than 11 ग्राम पर DL सेटा हमरो नॉर्मल रहउची माइल्ड रहउची हमरो 10 to 10.9 ग्राम पर DL मॉडरेट रहउची 7 to 9.9 ग्राम पर DL एंड सीवियर रहउची लेस देन 7 ग्राम पर DL हमरो टे हीमोग्लोबिन 8.5 देछि 8.5 हमरो केतरे आछि ना मॉडरेट एनीमिया तो ऑप्शन बी राइट आंसर मॉडरेट एनीमिया patient has undergone donor nephrectomy the drug will not be given morphine fentanyl paracetamol diclofenac आंसर करंतु समझते एटी पेशेंट हमरो कोन अछि ना डोनर नेफ्रेक्टोमी को ड्रग ता हमें पेशेंट को एडवाइस करिवा नाही मॉर्फिन फेंटानिल पैरासिटामोल डाइक्लोफेनाक यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी डाइक्लोफेनाक मॉर्फिन आ फेंटानिल हमरो रहउची ओपियोइड एनाल्जेसिक जोटा कि हमरो मोस्ट कॉमन यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एंड पैरासिटामोल हमरो रहउची एसिटामिनोफेन ग्रुप रो डाइक्लोफेनाक कोन रहउची हमरो ना एनसेड ग्रुप रे कोन हबो ना एनसेड ग्रुप रो ड्रग हमरो डोनर पेशेंट को देले कोन हबो ना एनसेड हमरो कोन करे इनहिबिट कॉक्स एंजाइम जोटा कि हमरो कोन करिवो ना डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हमरो कोन करे ना मेंटेन vasodilation of renal arteries तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमरो डिक्रीज हेले कोन हबो ना ब्लॉक हबो हमरो vasoconstriction ब्लॉक हे जिवो एंड decreased blood flow हेले कोन हबो हमरो ना पेशेंट को रिस्क फॉर AKI सेत पे हमें पेशेंट को डाइक्लोफेनाक जोटा कि हमरो एनसेड ग्रुप रो ड्रग रहउची सेटा हमें डोनर नेफ्रेक्टोमी केस रे अवॉइड करिवा in an immunocompromised patient the nurse should take infection prevention method when WBC is बे पेशेंट हमरो जे कि immunocompromised patient रहउची हमरो WBC केते रु कम हे गले हमें तारो इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करिवा 11,000 7,000 5,800 एंड 2,000 आंसर करंतु समझते नॉर्मल WBC काउंट हमरो केते रहउची ना 4,000 टू 11,000 ते हमरो ऑप्शन ए 11,000 एटा नॉर्मल अछि 7,000 नॉर्मल अछि 5,800 नॉर्मल अछि 2,000 हमरो एब्नॉर्मल अछि 2,000 हमरो ऑप्शन डी राइट आंसर जते बेले पेशेंट रो WBC 2,000 रो कम हे जिवो हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेथड को अप्लाई करबा An antenatal mother is admitted with complaint of eclampsia. The antenatal mother admit है जी कौन complaint नहीं की ना eclampsia. What will be the loading dose of magnesium given to the patient? Magnesium loading dose रे हमें कितने दबा patient को 4 ml in 16 ml normal saline 8 ml in 12 ml of normal saline 6 ml in 14 ml of normal saline
2 ml in 18 ml of normal saline. आंसर करंतु समस्ते. आमे लोडिंग डोज रे केते दउछु मैग्नीशियम पेशेंट को ना 4 ग्राम इन 20% सॉल्यूशन. 4 ग्राम को आमे 20 ml डाइल्यूट करूछु. हमरो 1 एम्पुल मैग्नीशियम रे केते रहउची ना 1000 mg रहउची पर 2 ml रे. तो हमको केते दबार अछि 4 ग्राम दबार अछि. 1000 mg माने हमरो आसिला 1 ग्राम आसिला. 1 ग्राम हमरो रहउची 2 ml रे. हमको 4 ग्राम दबार अछि. ताले आसीबा हमरो 4 ग्राम आसीबा हमरो 8 ml रे. तो 8 ml को हमको 20% रे डाइल्यूशन करिवार अछि. तो हमरो करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी 8 ml plus 12 ml of normal saline. A patient was brought to emergency department with complaint of chest pain from last 1 hour. गोटे पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आसी कौन कंप्लेन ना ना तार 1 hour धरी की चेस्ट पेन होची. Which test is done to detect myocardial infarction? मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करिया पई को टेस्ट हमें करिबा. सेरम इलेक्ट्रोलाइट, चेक एबीजी, चेक सीबीसी, ट्रोपोनिन टी. आंसर करंतु समस्ते. यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी ट्रोपोनिन टी. हमरो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करिया पई हमें ट्रोपोनिन टी टेस्ट करछि. Which of the psychiatric drug does not need any test dose before starting routine dose? को साइकाट्रिक ड्रग हमको टेस्ट डोज दरकार पड़िबनी जोटा कि हमें रूटीन डोज स्टार्ट करिबा पूर्वरु. हालोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन, क्लोजापाइन, क्यूटीपाइन. आंसर करंतु समस्ते. यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी रेस्पेरिडोन. कहीं क्लोजापाइन हमरो ए ग्रान्युलोसाइटोसिस कॉज करची. ए ग्रान्युलोसाइटोसिस. हालोपेरिडोल कोन हमरो ना एंटी साइकोटिक ड्रग जोटा कि कोन करची ना सिवियर एक्यूट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स. सिवियर एक्यूट एक्स्ट्रा pyramidal symptoms. A patient admitted in a ward with the diagnosis of delirium. गोटे पेशेंट एडमिट है कौन डायग्नोसिस नहीं कि ना तारो डायग्नोसिस अछि delirium. In first 24 to 48 hours, what should nurse plan according to priority? First 24 to 48 hours रे हमें कौन प्लान करिबा. ओरिएंटेशन टू पर्सन, प्लेस एंड एनवायरनमेंट, टू रिस्टोर ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन, करेक्ट द वेक एंड स्लीप साइकिल, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस. आंसर करंतु समस्ते. यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए ओरिएंटेशन टू पर्सन, प्लेस एंड एनवायरनमेंट. फास्ट 24 to 48 hours रे कोन करिबा हमें पेशेंट को ओरिएंट करिबा टू पर्सन, टू प्लेस एंड टू एनवायरनमेंट. ए पेशेंट पोस्टेड ऑफ सर्जरी एडवाइज टू रिमूव ज्वेलरी बिकॉज. ए पेशेंट सर्जरी पई एडवाइस हिची ताको हमें ज्वेलरी रिमूव करिया पई कोन पई कहिबा. टू मेंटेन ओआर एथिक्स, टू कॉजेस बॉर्न टू पेशेंट विथ यूज ऑफ कटरी, to prevent theft, to prevent disturbance to surgeon. आंसर करंतु समझते. यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी इट कॉजेस बर्न टू पेशेंट विथ यूज ऑफ कटरी. हमें जते बेले सर्जरी टाइम रे इलेक्ट्रिक कटरी यूज करूचे जदि पेशेंट रो किछि मेटालिक ज्वेलरी थिबो
ताहले बर्न होबार चांसेस अछि सेते पई हमें पेशेंट को एडवाइस करिबा पेशेंट रो ज्वेलरी रिमूव करिबा पई एट व्हाट टाइम वार्ड सेंसस डन वार्ड रो सेंसस केते बेले करा जाय डे टाइम मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट नन ऑफ द एबव आंसर करंतु समझते यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव वार्ड सेंसस हमरो सब बेले मिडनाइट रे करंती जितेबाला से पेशेंट रो सेंसस काउंट हुए को वार्ड रे केते पेशेंट रहिले केते एडमिशन हेले केते डिस्चार्ज हेले एटा हमरो मिडनाइट रे काउंट हुए तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी जोटा कि नन ऑफ द एबव एड्रेनालिन डोज इन एनाफाइलेटिक शॉक एनाफाइलेटिक शॉक रे एड्रेनालिन रो डोज केते रहउची 1:1000 0.5 ml 1:10,000 0.5 ml 1:1000 1 ml 1:10,000 1 ml एनाफाइलेटिक शॉक रे हमरो एड्रेनालिन रो डोज केते रहउची ना 1:1000 1 ml रे ऑप्शन सी राइट आंसर पोजीशन फॉर पेशेंट विथ कंटीन्यूअस आरटी फीडिंग कंटीन्यूअस आरटी फीडिंग जेतेबेले चलची पेशेंट को हमें को पोजीशन दबा सुपाइन फाउलर्स रिवर्स स्टैंडलेनबर्ग साइड लाइन एटा तो इजीली समस्त आंसर दे परिबे ऑप्शन बी फाउलर्स पोजीशन जेतेबेले पेशेंट को कंटीन्यूअस राइज टू फीडिंग चलची हमें पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन दबा ड्यूरिंग राइज ट्यूब इंसर्शन टाइम रे भी हमें पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन दबा ड्यूरिंग राइज ट्यूब इंसर्शन ओ पोजीशन ना फाउलर्स पोजीशन normally enteral feeding are closed with water to open blocked tube and case finding in which area it is done with air NICU operation unit rehabilitation unit critical care unit यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए NICU a 19-year-old unmarried girl came to gynae OPD for vaccination against cervical cancer a 19-year रो गर्ल अनमैरिड गर्ल गायनाकोलॉजी ओपीडी को आसी कोन पई ना सर्वाइकल कैंसर रो वैक्सीनेशन पई व्हिच वैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट हमें को वैक्सीन एडमिनिस्टर करबा क्लाइंट को गाडासिल टीसीबी बॉक्सेरो एचबीबी आंसर करंतु समझते यार करेक्ट आंसर हमर आसीबो ऑप्शन ए जोटा कि गाडासिल केना गाडासिल हमर रहउची सर्वाइकल कैंसर पई टीसीबी हमर कोन ना टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन जोटा कि हमर टाइफॉइड फीवर पई रहउची टाइफॉइड फीवर पई बॉक्सेरो हमर रहउची मेनिंजाइटिस पई एंड एचबीबी रहउची हेपेटाइटिस बी patient in emergency department diagnosed to have fluid and air present in the lungs पे पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट रे एडमिट हेची तारो डायग्नोस्ट कोन हला ना फ्लूइड आ एयर प्रेजेंट ना कोठी लंग्स रे व्हाट इज द अबव मेंशन कंडीशन इज नोन एज जो लंग्स रे हमरो फ्लूइड आ एयर प्रेजेंट रहउची ताको हमें कोन कहउचू हेमोथोरैक्स हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स हेमोन्यूमोथोरैक्स एंड न्यूमोथोरैक्स आंसर करंतु समझते हेमोथोरैक्स हमरो कोन हबो ना ब्लड accumulation in pleural space हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स कोन ना हाइड्रो हमरो वर्ड यूज होची फ्लूइड पई एंड न्यूमोथोरैक्स हमरो कोन ना एयर प्रेजेंट पई तो यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी
हाइड्रोन्यूमोथोराक्स। नेक्स्ट देखिबा ऑप्शन सी कोन ना हेमोन्यूमोथोराक्स। हेमो कोन हेमोन्यूमोथोराक्स रे हमरो ब्लड प्लस एयर इन प्लूरल स्पेस। ए न्यूमोथोराक्स रे हमरो कोन आसीबो ना एयर accumulation in pleural space. Lignocaine and adrenaline not used for repair of injury to digitalis because adrenaline causes vasoconstriction of blood vessel supplying digitalis, which may lead to decreased tissue perfusion and necrosis. Adrenaline decreases the effect of lignocaine. Adrenaline causes systemic effect. Adrenaline causes vasodilation, which may lead to increased bleeding. आंसर करंतु समझते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए। एड्रेनालिन causes vasoconstriction of blood vessel supplying digitalis, which may lead to decreased tissue perfusion and necrosis. Patient with deep vein thrombosis is advised low molecular heparin. At which site nurse will administer this? ए पेशेंट रो डीबीटी अछि, डॉक्टर कोन प्रेस्क्राइब करचंती ना लो मोलिकुलर हेपारिन। व्हिच साइट नर्स विल एडमिनिस्टर, को साइट रे हमें मेडिसिन ता एडमिनिस्टर करिबा। सबक्यूटानियस, इंट्रामस्कुलर, ओरल, इंट्रावेनस। आंसर करंतु समझते। लो मोलिकुलर वेट हेपारिन रे हमरो कोन आछि ना एग्जांपल रे कोन ना एनोक्सापेरिन। एनोक्सापेरिन हमें केमती दोछ पेशेंट को ना सबक्यूटानियस। ऑप्शन ए राइट आंसर। Glove papers are discarded in which biomedical waste dustbin? ग्लोव्स जो पेपर रोची हमें सेटा को डस्टबिन रे डिस्कार्ड करिबा। ब्लैक डस्टबिन, रेड डस्टबिन, येलो डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन। आंसर करंतु समझते। यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए ब्लैक डस्टबिन। हमरो ब्लैक डस्टबिन कोथि पय यूज होची ना जनरल वेस्ट को डिस्कार्ड करिया पय। रेड डस्टबिन रे हमरो कोन डिस्कार्ड होची ना आईवी ट्यूब्स, ग्लोव्स, प्लास्टिक मटेरियल। येलो डस्टबिन रे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एंड सॉइल ड्रेसिंग। हमरो ब्लू डस्टबिन रे कोन डिस्कार्ड होची ना एम्पल एंड vial. Biomedical waste management of vial and broken ampule discarded in. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रे ब्रोकन भाइल आउ एम्पुल को डस्टबिन रे डिस्कार्ड करा होची। ब्लू डस्टबिन, रेड डस्टबिन, ब्लैक डस्टबिन, ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स। आंसर करंतु समझते। ते हमरो देची भाइल एंड ब्रोकन एम्पुल सेटा हमरो डिस्कार्ड होची ना ब्लू डस्टबिन रे। Sharp blade and needle to be discarded in which of the following? Sharp blades and needle हमरो को डस्टबिन रे डिस्कार्ड होची अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ब्लैक कार्डबोर्ड, रेड, व्हाइट कंटेनर, ब्लू। शार्प ब्लेड एंड नीडल हमरो डिस्कार्ड होची व्हाइट जोटा कुकी पंचर प्रूफ कंटेनर कुआ जाउची। पंचर प्रूफ कंटेनर। Vehicle 30 is natural absorbable,
synthetic non absorbable, synthetic absorbable, natural non absorbable. जो vehicle 30 suture आमर रोची ताकू कौन कुआ जाउची आंसर करंतु समस्ते यार करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल रे हमरो कोन आछि ना वेहिकल मोनोक्रिल एंड पीडीएस नेचुरल एब्जॉर्बेबल रे कोन आछि ना प्लेन कैटगट क्रोमिक कैटगट सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल रे नायलॉन पॉलीप्रोलिन एंड पॉलिस्टर नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल हमर आछि सिल्क Which of the following is not a nursing intervention to maintain the temperature of a newborn? कोउटा हमरो नर्सिंग इंटरवेंशन नुह न्यूबॉर्न रो टेम्परेचर मेंटेन करिया पई ड्राई द न्यूबॉर्न immediately after birth wrap the newborn in warm blankets use a warmed cloth for weighing the unclothed newborn place the newborn near drafts or air vents आंसर करंतु समझते एठी हमको नॉट पचारिछि क्वेश्चन ले तार हमर करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी प्लेस द न्यूबॉर्न नियर ड्राफ्ट्स और एयर वेंट्स ड्राई द न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इटा हमर कोन रे आछि ना इवापोरेशन रे एंड wrap the newborn in warmed blanket हमरो कोन आछि ना convection रे and use a warmed cloth for weighing the unclothed newborn टास्च हमरो convection रे ते हमरो करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी place the newborn near drafts or air vents थैंक यू समस्तंकु आजिरो सेशन रे जदि भी कहार किछि डाउट अछि मते पचारिबे कमेंट सेक्शन रे आजिरो सेशन को एंड करबा थैंक यू